Can anyone let me know what is batch learning? Yes, ma'am. Hmm. Tell me, beta. What is batch learning? Ma'am, it's me. It means that you're not studying alone, but in a batch Okay. Are we doing within a that group of students. exactly within a group of students, within a group? But the learning is throughout the group. Yes, ma'am. Okay. So it is throughout the group. So it is not like कि that I am just making niyati to learn something despite the fact we are right now 27 in the class. So it is throughout the group. So no matter whether I am emphasizing on niyati, but at the same time, all other students are also gaining something. That comes under batch learning. It is also called as offline. Can I say that offline? Fine. After this, who will tell me what is online learning? Ma'am, is it one to one? One to one, a sort of, It and can be like one to one or exactly. batch both. Not exactly the batch, but yes, over in online learning, the incrementation is sequentially. Now, who will tell me what we mean by incrementation and sequentially? That means one to one or a group of a bigger group. That means if I'll say, okay, fine, Niyati, after 10 minutes, kindly meet me so that I can make you learn that particular concept. Now it is one on one. Okay, so it is now sequentially a small group from a larger group. Or I'll say, okay, I need 4 to 5 students who can work along with me on a specific project. Now it is a despite a fact कि we are having almost 36 students in our class and we are and from that I just identified or I just asked for only 5 or 6 students to work with me on a project. Okay, now what we mean by incrementing sequentially over here, the incrementation is over on the whole on the group, completely on the group. And incrementing bhi bahut comparatively is not the right word for the batch learning, but for the case of online learning, it is incrementation and is sequential. That means I can go from one to one. So first of all, I can simply say, okay, fine, right now I can go with Niyati, then I can go with Ruby, then I can go with Kanika, and so on. So it is now one on one, or I can simply say from a larger group to a smaller group, then I can simply say it is a ऑनलाइन लर्निंग. सो डोंट मिक्स इट विद योर ऑनलाइन लर्निंग जो तुम्हारे को एट प्रेजेंट अभी हो रहा है, या फिर जो आप लोग कोर्सेज लेते हो उसमें जो आपकी ऑनलाइन लर्निंग होती है. एंड ऑनलाइन लर्निंग जैसे हम गूगल पे भी सर्च करते हैं तो क्या होता है, इफ आई वांट टू नो समथिंग आई सिंपली राइट ऑन गूगल एंड आई गेट द इन्फॉर्मेशन. सो नाउ इट इज वन ऑन वन. At the same time, if I ask you all people to kindly go through the Google and let me know what is online learning, so now a batch or a small group of, because everybody is not doing that, small group of people will be going to Google and searching out what is online learning. Then it is coming under the heading of online learning. Which one is more beneficial, class? Batch learning. Batch learning. Okay. Anyone else? No one is in for group learning. Ma'am, online is also good. Online. So class in data science now, it is not like कि, okay, this one is more beneficial, this one is not more beneficial. So when we are going for certain set of algorithm now, then we can simply say that, okay, this parameter is if it is having a value lesser than 0, then it is a providing you a good performance. If it is greater than 0, then it is providing a better or worse performance. Over there we can simply identify whenever there is a mathematical concept. Now we can simply say this is good or bad. But in case of data science, whatever mode we are having, whether we are going for the batch or we are going for online learning or we are going for instance based learning, they all are equally good. There is nothing good or bad or which one is more preferable. It depends on what kind of application we are working on.
किस चीज पर हम एनालिसिस कर रहे हैं, कहाँ से हम डेटा सिंथेसाइज कर रहे हैं, कौन से डेटा पे हम काम कर रहे हैं, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन, सो दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन डिफाइंस व्हाट एग्जैक्टली वी आर गोइंग फॉर. समटाइम इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर अस कि जब हम एनालिसिस कर रहे होते हैं तो हमारे पास मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डेटा सेट होता है, तो आई हैव अ रिजिडिटी फॉर माई सिस्टम, दैट इज मेरा सिस्टम पता नहीं वो ट्रिलियंस ऑफ डेटा को हैंडल भी कर पाएगा या नहीं कर पाएगा. तो व्हाट आई विल डू, आई विल सिंपली मेक अ स्मॉल बैच ऑफ दैट डेटा सेट सो दैट आई कैन work on that data set and then I can contribute that. Since the data belongs to this trillion of data set, a group has been taken care of, and the performance on the group is this much, so overall data set will be converging to that point. So over there I can go for batch learning. If it is for online mode or something, though, I can simply go for, okay, I'll call some function that is related to the online server or something. I can, so over there I can simply say, okay, it will be going for one line to one another line. For example, if I'll tell you, there is something called as a stochastic gradient. So now stochastic gradient works on line to line. So it is sequentially incrementing. And there is mini batch stochastic gradient. So now it is working on the batch of the complete data set. So it all depends on ki what type of application you are working on. So it is not defined ki, okay, this is right or this is wrong. Is it okay, class? Till this point, it is clear to everyone. Shall I proceed further? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Can anyone tell me what are the challenges that could be faced by machine learning? कुछ challenges जहाँ हमें लगता है कि हाँ, these could be the problem that can lead to downfall of this particular field. See, everything has their pros and cons. We are talking about the challenges का मतलब क्या हुआ, we know what exactly the good data science is or bad data science is. But how do I define it as a bad data science? That means there are certain limitations or challenges or certain gaps are Less there that. amount of data, हाँ जी. less amount of training data. Less amount of training data, sort of. Anything else? Hmm. Anything else, class? बहुत आसान है. सोचो. अपने आप के लिए सोच के देखो, बिकॉज यू पीपल आर नथिंग बट एन एल्गोरिथम. हम तुमको पढ़ाते हैं, तुम उसे प्रोसेस करते हो, एनालाइज करते हो, सही है गलत है, और उसके अकॉर्डिंग तुम अपनी स्ट्रैटेजीज बनाते हो कि फाइनल एग्जाम में हमें नोट्स में. क्योंकि आई होप हम सब अगर तुमको ये भी बोलते हैं कि काइंडली रेफर अ बुक, तो तुम पूरी की पूरी बुक तो याद नहीं करते ना उस चैप्टर के. अगर उस चैप्टर में देर आर 4 to 5 pages, so you are not going to learn each and every point mentioned in those 4 to 5 pages. So what you will do, you will pick and drop. Ki, okay, this line is important, this line is not important. Maybe for some other person, that particular line that is not important to you, but it is important for some other person. That can happen out. Fine. So think about it. You people are also working as an algorithm. So what exactly challenges you face while learning, while doing the analysis? Sometimes it could be poor quality of data. Exactly. Sometimes, many time, in fact, I should say. Anything else? I'll explain everything. Poor quality. What else? What else, class? Can I say that irrelevant features? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Anything else? Underfitting the training data. Underfitting and training. This is something good concept. So I'll say overfitting rather than underfitting. I'll say overfitting, and this is the important problem. Then the test and validation set. There are many more challenges, but major are these ones. So let's talk about
the challenges one at a time. So insufficient training data set. What we mean by this? Insufficient training data set. So it is like I have a data set, but जब मैं एल्गोरिथम को स्टडी करा रही हूँ या लर्न करा रही हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल राइट नाउ, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास राइट नाउ? 31. 2 minus. So it is 29. So right now 29 students are there. Is it a sufficient data set for me to study that you people are gaining something in data science? Yes, No, class? ma'am. Because if I'll judge, so it is like 29 is the total data set in which I have to go for training. Sorry. Training first, and then finally I have to define a test data set also. So it is like for training, if I'll go for training, undoubtedly 29 will do hardly anything. Today somebody is doing something, to tomorrow that person is not available, might not be attending the class, might not be attentive in the class. So 29 is hardly anything. That means if I am not having a sufficient amount of training data set, undoubtedly my test set will not give me highly accurate predictions. So I need a good amount of data set. So it, so that मतलब ratio क्या होती है? By default the ratio is uh, 70 is to 30, where 70 is your training set and test is 30% of complete data set. Similarly, it is 80 is to 20 or 75 is to 25. Is it okay? Fine, class. So now just see, it is basically 3 is to 1 ka ratio. So if I am saying 29, who will tell me what is 79% of 29? Who will tell me 79, 75% of 29? What will be the amount of data set we have? Hanji class, 75 multiplied by 29 divided by 100 is how much? 21.75. 21.75. I'll say 22, and I'll have just 7 as test case. So 7 को identify कराने के लिए कि वो सही amount of data output देंगे, मेरे को 29 को 29 में से सिर्फ 22 को learn कराना पड़ेगा. Is it a good amount of data? No, it is not. It is insufficient data because the training will be overfitted. ठीक है, ओवरफिटिंग का मतलब क्या होता है अभी आके बताती हूँ, बट अभी के लिए मान के चलना ट्रेनिंग विल बी ओवरफिटेड. सो वी शुडंट हैव इनसफिशिएंट ट्रेनिंग डेटा सेट. सो इसलिए ये नहीं बोला गया इनसफिशिएंट डेटा सेट है हमारे पास, हमने क्या बोला है? इनसफिशिएंट ट्रेनिंग डेटा सेट. नेक्स्ट वन इज पुअर क्वालिटी ऑफ डेटा सेट. व्हाट वी मीन बाय पुअर क्वालिटी ऑफ डेटा सेट? So poor quality of data set will be like I have maths, science, SST. I have 1, 2 and 3 students का मेरे पास डेटा है 75, 80, 90, let it be 85 and 45, 80, 60. Who will tell me, is the data sufficient? First of all, the answer is no. No. Second, is the data in good quality? Is the data in good quality? Again, it's no. Why it's no? It Because is there are, inconsistent. exactly, it is inconsistent, as well as it is having some of the values that are missing. Fine. Or I can simply, what should, what is the subject of data science? Maths. How can you say that? It could be music, it could be management. Yes, ma'am. So it is in a poor quality. So I have to reframe it. So this quality, this type of data set shouldn't be there. So this is again a big challenge. Class, it is just a 3 column data set for 3 students only. Easily identify ho gaya. Think about, you have crores of data set. Now sir, just think about, will you be able to identify कौन से row और कौन से column में तुम्हारे पास data missing है? Will you be able to do that? No, we can't.
Even if we are having a data set of hardly 40 entries, we are not able to identify okay कौन से cell में data नहीं है. So this is what is called as poor quality. This is something that we don't want. Then is the irrelevant feature. Who will tell me irrelevant feature? इसी data set में मैंने अभी बोला है. Irrelevant feature जो कि कोरिलेटेड नहीं है, या फिर ये कहना चाहिए जिसके होने से आउटपुट पर या लेबल पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. मींस अगर वो फीचर एग्जिस्ट कर रहा है तो भी हमारा आउटपुट बाकी सारे कॉलम के अकॉर्डिंग आ रहा है, अगर वो नहीं भी हम कंसिडर कर रहे तो भी बाकी सारे फीचर्स के अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट आ रहा है, लेकिन उसके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा. सेकेंडली इररेलेवेंट. ओवर हेयर I said what is the same, you people said it's maths and I said no, it is music, it could be management. So now it is irrelevant. So there is no point of taking such kind of features, and despite the fact there are n number of times which what happens ki there are more than if there are more number of features, more than 30% of the features are not utilized to analyze the data set. So we have to think about that also. I'll cover this in the last. What is this test and validation set? Let me talk about it. And after that, fitting, overfitting, and underfitting will be there. So, class, if I'll say that 70% is training and 25% is टेस्टिंग. क्लास हमने यही बोला है ना. अब इस 70% ऑफ ट्रेनिंग सेट में से भी अगर मैं कुछ परसेंट वैलिडेट कर दूं, वैलिडेट का मतलब क्या है कि टेस्ट ट्रेनिंग कराने के बाद उतना डेटा सेट, लेट इट बी 70% का मैंने कहा 20%, 70% में से मैंने 20% वैलिडेट सेट में डाल दिया. इसका मतलब क्या हुआ, बिफोर फाइनल टेस्टिंग सेट इज बीइंग यूटिलाइज्ड, I'll take some part of the training set, I'll work it as a test set so that I can simply identify whether my model is working in a better manner or not. After that, what I'll do after doing the validation, I'll simply go to my testing data set, I'll incorporate in my algorithm, and I'll identify that my accuracy or my prediction is coming out in a better manner because I had already validated the data set. इसको लेकर के बात करते हैं. तुम सबने ये काम किया है. क्लास सबका ओपन बुक एग्जामिनेशन हुआ था. Yes, ma'am. ओके. ओपन बुक एग्जामिनेशन सबको देना था. Yes, Fine. ma'am. That was the total data set. That was for OBE. Fine. अब OBE में से उन्होंने कहा कि एक मेल आया होगा जिसमें उन्होंने बोला था कि देयर इज अ मॉक एग्जामिनेशन. हुआ था कि आपको एक बार कोई पेपर दिया जाएगा सो दैट एटलीस्ट यू पीपल कैन लर्न अबाउट हाउ टू डाउनलोड, हाउ टू अपलोड द आंसर्स. आया था. Yes, ma'am. जब वो हुआ था दैट वाज Yes, हैपनिंग ma'am. ऑन दी ट्रेनिंग सेट. कौन था ट्रेनिंग? यू ऑल स्टूडेंट्स. All the students of the University of Delhi has been asked to perform this. Why? Because they were training you people. ठीक है. अब वो ट्रेनिंग जब कराई जा रही थी उन्होंने किस पर कराया? सब पर कराया. लेकिन उसमें से कितने स्टूडेंट्स ने एक्चुअली में वो मॉक दिया? क्या सबने दिया था? सबने दिया था या किसी किसी ने दिया था? Did everybody tried it? Yes class, did everybody try it? Yeah, few of the students actually missed out. So out of the whole training set, जो जिन्होंने अप्लाई किया, जिन्होंने ट्राई करके देखा, that were called as the validate. So now they are no aware of कि exactly इस तरीके से अपलोड करना है. और यूनिवर्सिटी को भी पता चल चुका है कि स्टूडेंट्स को आता है या पता है कि कैसे आपको पेपर डाउनलोड करना और कैसे अपलोड करना है. नाउ फाइनल टेस्टिंग कब हुई? On the day of your examination. On the day of your examination, those students who didn't tried at the time of the validation, they directly applied for it. They faced some of the clinches. Other than that, they were able to perform. That is basically called as the testing data set. So basically, we used to call it as test validate.
and it is not mandatory that you have to validate. You can simply work on with this 70 and 25%. ये कंडीशन लाना जरूरी नहीं है, बट अगर हम ये कंडीशन लेकर आते हैं तो इससे हमें क्या बेनिफिट हो जाता है, डिस्पाइट द फैक्ट दिस इज एन एडिशनल स्टेप, बट इससे हमें फायदा क्या हो जाता है कि अगर हमारी प्रिडिक्शन टेस्टिंग के लिए ठीक नहीं भी आ रही होगी, वैलिडेट होने की वजह से वो हमें पहले ही पता चल जाएगा कि हमारा ट्रेनिंग में प्रॉब्लम है, ट्रेनिंग ठीक से नहीं हुई है, या सर्टेन पैरामीटर्स हैव टू बी tuned again so that we can have a better accuracy and final prediction could be more of a kind of thing that it will happen. सो ये काम करने से पहले, टेस्टिंग कराने से पहले अगर हम अपना वैलिडेट करा लें तो इट इज हाईली बेनिफिशियल. इफ बाय सम चांस अगर हम लोग वैलिडेट नहीं भी यूज करते हैं एंड वी आर गोइंग डायरेक्टली फॉर द टेस्ट सेट, it doesn't make any difference, but using a validation is a good habit for the data scientist. Is it okay class? Clear है यहाँ तक? Yes, ma'am. Okay. Last concept. Who will tell me what is overfitting the training data? In fact, I will not say overfitting the training data. I just want to know what is overfitting. मैम कम स्पेस में ज्यादा चीजें फिट करना. कम चीज में ज्यादा. Okay. Anything else? Come with the concept of your data science. I mean, imagine you have a data set. चलो data set की बात छोड़ते हैं. कोई एक एग्जाम्पल सोच के देखो कि कम जगह में ज्यादा को फिट करने का मतलब क्या है. कोई एग्जाम्पल इनकॉर्पोरेट करो एंड देन लेट मी नो. Okay, let's talk. We will be talking first about the overfitting. We are not talking about the underfitting. So first understand the concept of fitting. See, फिटिंग का मतलब क्या होता है. फिटिंग का मतलब ये होता है कि इट इज फिटिंग द डेटा सेट. फिटिंग द डेटा सेट का मतलब अगर मैंने 100 एंट्रीज दी हैं तो 100 के लिए वो परफेक्टली काम कर रहा है, सही आउटपुट दे रहा है. फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास आई वॉन्ट टू मुझे एक सूट बनवाना है तो अनडाउटेडली आई विल गो टू अ टेलर एंड वो मेरी मेजरमेंट लेता है और फिटिंग का सूट बना के दे देता है. ऐसा ही होता है ना. Yes, ma'am. So when I'll wear it, it will be perfectly fitted to my body. So that is something called as fitting. ठीक है, वही फिटिंग हम लोगों ने यहाँ पर भी यूज करा है कि वी हैव अ डेटा सेट. उस डेटा सेट में हमने डिफाइन किया हुआ है कि हमारे पास 70% ट्रेनिंग डेटा है और 30% हमारे पास टेस्ट डेटा है. तो टेस्ट डेटा को तो मैं फिट कराने की भी बात नहीं कर सकती, सबसे पहले मुझे ट्रेनिंग करानी जरूरी है. वाई ट्रेनिंग इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज अनटिल मेरे एल्गोरिथम को यही नहीं पता होगा कि उसको कौन से डेटा सेट पे काम करना है, तो जब तक वो ये चीज नहीं देख पाएगा. कंचन डेफिनेटली आई एक्सप्लेन यू अगेन. सो जब तक वो उस डेटा, ट्रेनिंग वाले डेटा को फिट नहीं करा पाएगा अपने मॉडल में, मतलब अगर उसने बोला है कि उसको कहा जा रहा है कि आपके पास 4 फीचर्स हैं और 4 फीचर्स के डेटा पर उसने काम ही नहीं किया, उसने याद ही नहीं किया या उसने कैलकुलेशन ही नहीं करी है, तो नए वाले डेटा सेट पर वो काम कैसे कर पाएगा. तो इसलिए फिटिंग कराना जरूरी है. अगर ये फिटिंग ठीक है, ठीक तरीके से है, मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग है, तो वो ठीक से काम करेगा. अगर ये फिटिंग ठीक नहीं है तो वो दो तरीके की चीजों में लैंड आउट करेगा. फर्स्ट वन इज ओवर फिटिंग, सेकेंड वन इज अंडर फिटिंग. ठीक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज ओवर फिटिंग. ओवर फिटिंग का मतलब क्या होता है? बहुत टाइट है. व्हाट वी मीन बाय दिस? ओवर फिटेड. ओ ग्रेट, थैंक यू. ओवर फिटिंग आई अंडरस्टैंड. बहुत टाइट है, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? थिंक अबाउट इट. तुम सब ये काम करते हो बेटा. डेटा साइंस में जितने भी टर्मोलॉजीज यूज करे जाएंगे वो सारे के सारे तुम अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करते हो. सो क्या मतलब हुआ? माई सूट इज टाइट, मतलब स्टिच होने के बाद की बात कर रही हूँ, 4-5 महीने के बाद की बात नहीं कर रही हूँ. जब स्टिच कराया तब ट्राई किया, ट्राई करने पे पता चला इट इज टाइट. नाउ व्हाट यू मीन बाय दिस? क्लास इजी. हाँ जी. नो कंचन, अंडर फिट नहीं है. हाँ जी, कौन बताएगा?
अंडर फिट ओवर फिट तो बाद में आएगा, लेकिन अभी तो सिर्फ इतना बात हो रहा है कि टाइट है. व्हाट वी मीन बाय दिस, क्या क्या प्रॉब्लम है अगर मैं कह रही हूँ टाइट है? जिस पोजीशन पे उसके स्टिचेस होने चाहिए उससे पहले. कैन आई से दैट कि हाँ हाँ बोलो बेटा. हमें स्पेस कम है, डेटा ज्यादा है। ओके स्पेस, ओके डेटा इज कॉम्प्लेक्स. प्रेक्षा सब कुछ है लेकिन एग्जैक्टली क्या है? कैन आई से दैट द मेजरमेंट्स वर टेकन टू बी. मैम स्पेस कम, डेटा ज्यादा। स्पेस कम डेटा ज्यादा, और आई कैन सिंपली से दैट द मेजरमेंट जिस चीज के लिए की गई थी वो तो परफेक्ट थी, लेकिन वेल वाइल इम्प्लीमेंटिंग समथिंग वेंट रॉन्ग, कि वो नहीं ठीक हुआ. कैन आई से दैट? Yes, फाइन. ma'am. सो आपने क्या बोला कि ओवरफिटिंग का मतलब इज लाइक कि योर डेटा सेट इज बीइंग larger number, but the measurements done or the space required for doing that particular measurement or handling of that data set is low. Fine. So I'll reframe it now. The model performs well on the training data set, but it doesn't generalize well. इसका मतलब क्या हुआ? The model performs well on the training data set, but it doesn't generalize well. अच्छा चलो इसको दूसरे एग्जाम्पल से बताते हैं. हम सबने 12th का एग्जाम दिया है. फाइन. हम सबने 12th क्लास के एग्जाम्स दिए हैं. Yes, ma'am. सो प्री बोर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट. फाइन. सो प्री बोर्ड हमारा डिफाइन कर देता है कि हमारे बोर्ड में कितने मार्क्स आ सकते हैं या हमें और कितनी मेहनत करनी है कि और बेटर मार्क्स आ जाएं. ऐसा ही कुछ होता है. सो सब ये बोलते हैं प्री बोर्ड जरूर देना है. होता है ना यही? ऐसा कोई नहीं होता जो प्री बोर्ड मिस करता हो. क्लास एटलीस्ट आंसर यस और नो, बिकॉज दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. ये Yes, कंसेप्ट ma'am. बहुत जरूरी है. Yes, ma'am. Yes, फाइन. ma'am. नाउ जस्ट टेल मी, जब आप प्री बोर्ड के आसपास पहुंचते हो तब तक आपकी प्रिपरेशन कैसी होती है? हाँ जी, प्रिपरेशन कैसी होती है क्लास? Almost done. मतलब almost. Almost done. It, are you people very confident that your pre-board examination will go very fine, No, very ma'am. well? No, No, ma'am. ma'am. Why? Despite the fact your preparation is done. But because, ma'am, this time the entire syllabus will be coming for the first time. Like, तो क्या हो गया? प्रिपरेशन तो हो गई है, तैयारी हो चुकी है. देन वेयर इज द प्रॉब्लम? पर पूरी तैयारी नहीं हुई है ना, मतलब थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ रह तो जाता है. पेरेंट्स जब तुमसे, अच्छा तो पेरेंट्स जब तुमसे पूछते हैं कि अच्छा तैयारी हो गई है, तो तुम क्या जवाब देते हो? ये बोलते हो कुछ ना कुछ रह गया है, पूरा सिलेबस आ रहा है, या क्या बोलते हो उन्हें? तैयारी तो हो गई है, like, but experience नहीं है writing, कैसे लिखेंगे? ओके तो मतलब हम जनरलाइज बोलते हैं, हम ये कहते हैं हाँ तैयारी हो गई है. हम कभी भी इतने डिस्क्रिप्शंस नहीं देते हैं कि हम लिख नहीं पाएंगे या पूरा सिलेबस आ रहा है तो पता नहीं मैं इनकॉर्पोरेट कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी. हम ये सब नहीं बोलते. हम सीधा बोलते हैं कि हाँ हमारा हमने प्रिपेयर कर लिया है. ठीक है. नाउ Yes, ma'am. just remember the statement that we had done with the preparation. Okay, that means on the day of your examination in the pre-board you will perform well. This is being in your mindset, in your parents mindset. Okay, so now what will happen? The moment you are having the question paper and you are looking at the question paper, do you feel like so confident? Okay, I know every question, I have every answer to the questions. पर यू पीपल डैम कॉन्फिडेंट कि हाँ हमें सब आता है क्योंकि हमने तो तैयारी की हुई है. No, ma'am. बाय. No, ma'am. वाई? And because most of the time questions are not very direct. वेरी डजंट मेक एनी डिफरेंस. यू आर प्रिपेयर्ड. को टेस्ट तो कुछ भी आ सकता है भाई. पूछा तो किसी भी तरीके से जा सकता है ना. वाई यू वांट एवरीथिंग टू कम डायरेक्टली? ओके व्हाट इज योर नेम रादर देन आस्किंग लाइक दिस मे आई नो योर नेम मींस द सेम. सो कहाँ Yes, प्रॉब्लम ma'am. है? तो फिर कहाँ प्रॉब्लम है? ट्रेनिंग कम। ट्रेनिंग कम है. We forget something. नो अगर तुम सैंपल पेपर उठाओगे, तुमने तो सैंपल पेपर पूरा किया था, सैंपल पेपर के तो सारे क्वेश्चन तुम्हें आते थे, तो तुम्हारी ट्रेनिंग तो परफेक्ट हुई है. सो अगर तुम्हारा सैंपल पेपर का ही क्वेश्चन आता, जैसे अभी किसी ने आंसर दिया था मैम क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं है, अगर सैंपल पेपर वाला ही क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया गया होता तो तुम आंसर 100% लिख के आते. Yes, ma'am. है ना? Yes, तो इसका ma'am. मतलब क्या हुआ? इट इज द प्रॉब्लम दैट योर ट्रेनिंग इज वेल, training is good, but the moment you have something in test
you are not able to answer, then it is basically called as, it is called as overfitting. That means हम ट्रेनिंग करा रहे हैं तो तुम्हें सब कुछ आता है, जैसे ही कुछ और आ जाता है तो तुम आंसर ही नहीं कर पाते हो. नाउ इट इज Yes, आई ma'am. जस्ट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. आई एम नॉट सेइंग कि मैंने क्वेश्चन ये कहा है कि जो तुम्हारे को ट्रेनिंग कराई है उसी में से कुछ पूछा जा रहा है या आउट ऑफ द बॉक्स कुछ पूछा जा रहा है तो तुम आंसर नहीं कर पा रहे हो. डेफिनेटली उससे मिलता जुलता ही आ रहा है शायद, इसलिए मैंने बोला व्हाई यू वांट टू नो एवरीथिंग, व्हाई यू थिंक दैट एवरीथिंग शुड कम डायरेक्ट. जैसे मैंने एग्जांपल लिया, व्हाट इज योर नेम, मे आई नो योर नेम, मींस द सेम. सो दिस इज समथिंग कॉल्ड एज ओवरफिटिंग. Fine, and this is the problem. So whenever we say generalized, जनरलाइज का मतलब क्या होता है, दैट जब हम टेस्टिंग डेटा देंगे, डेटा देते हैं तो आउटपुट ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा, उसके लिए हम कहते हैं जनरलाइज्ड, कि हमारा जनरलाइजेशन ठीक नहीं है. सेकेंड एग्जाम्पल थोड़ा पर्सनल है बट थोड़ा समझने की कोशिश करना ताकि याद रहे. आ, हम सबके फ्रेंड्स हैं. Yes, ma'am. Yes, ma'am. भाई इस पे तो आंसर कर दो, सभी के फ्रेंड्स होते हैं. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, So ma'am. since your childhood you have people, you have friends till now. Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके. सो हम सबके बेस्ट फ्रेंड्स भी होते हैं क्योंकि बचपन से Yes, साथ में ma'am. है तो बेस्ट फ्रेंड भी होते हैं, और हमें उनकी आदतें भी पता होती है, Yes, ma'am. अच्छी भी बुरी भी अनवांटेड भी पता है ना हमें. ठीक है. Yes, Yes, ma'am. तो तो सपोज तुम्हारी कोई फ्रेंड है जिसके साथ जिसके बारे में तुम्हें पता है कि अगर उसे कोई एक बात तुमने नहीं बताई तो वो नाराज हो जाएगी. हाँ या ना, होता है ना, आइडिया है. Yes, ma'am. yes, Fine. Yes, ma'am. So ma'am. now this is something. It is like कि okay, next moment of day you called her, और 2 दिन के बाद तुमने फिर से फोन किया, फोन नहीं पिक किया. अब ये फर्स्ट टाइम इंसिडेंट हो गया, और ये हर 10-15 दिन के बाद या 20 दिन के बाद अगर ये होता है, सो ये तुम्हारे लिए नॉर्मल होगा या फिर एबनॉर्मल होगा. अगर एबनॉर्मल होता है तो मतलब फर्स्ट टाइम होता है तो वी ट्राई टू आइडेंटिफाई कि क्या प्रॉब्लम हुई है. लेकिन अगर हमारे साथ ये बहुत फ्रीक्वेंटली होता है तो हम उसे कहते हैं नॉर्मल है. हमें बोलता है ना आदत है ये तो इसकी, ऐसे ही बोलते हैं ना. So is it Yes, is it is it something normal to you people? Yes or no? So this comes under overfitting. That means you are simply saying ये तो generalized है, no matter what ये तो होता ही है, ये तो हर बार का ड्रामा है, ये तो होना ही है, 2 दिन के बाद ठीक हो जाएगी, ऐसे ही होता है ना. सो दिस इज समथिंग कॉल्ड एज जनरलाइज. इसका मतलब अब तुम्हें नहीं पता नेक्स्ट वेरी नेक्स्ट मोमेंट क्या हो जाए, फिर से ये सीक्वेंस आ जाए. बिकॉज, और तुम्हें क्यों नहीं अफेक्ट हो रहा, क्योंकि तुम्हें पता है कि हैबिचुअल है. सो दिस कम्स अंडर ओवरफिटिंग. नाउ हु विल टेल मी व्हाट इज अंडरफिटिंग? अगर ओवर फिटिंग ये है तो अंडर फिटिंग क्या होगा? आई गिव यू अ टेक्निकल एग्जांपल आल्सो. इट इज टोटली ऑपोजिट ऑफ अंडर फिटिंग, ओवर फिटिंग. लेकिन कैन एनीवन एक्सप्लेन मी व्हाट वी मीन बाय दिस? यस क्लास, कौन बताएगा मुझे? बहुत आसान है. अंडर फिटिंग ऑपोजिट टू ओवर फिटिंग. training is not done so well. Trading is not done so well. Yes, it can be incorporated. Anything else? ओके. हाँ जी, कोई और कुछ बताना चाहता है? शैल आई ऐड? Generalization. Okay. So class underfitting. Simple answer is training is not good or simple. इसका मतलब क्या हुआ? अगर ओवर फिटिंग में ट्रेनिंग तो बहुत अच्छी है लेकिन जनरलाइजेशन ठीक नहीं है. अंडर फिटिंग में क्या है?
ट्रेनिंग ही अच्छी नहीं है तो जनरलाइजेशन तो होनी ही नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? मतलब अब तो अगर टेस्ट डेटा आएगा तो नो मैटर व्हाट, कुछ भी हो जाए, आउटपुट तो ठीक आना ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, लुकिंग इट इन अ टेक्निकल मैनर, दैट द ट्रेनिंग इज वेरी सिंपल। कुछ को समझ में आ गया है, बाकियों को नहीं समझ में आया। सो इफ आई से 29 people right now in my class, hardly 4 or 5 are responding, that means only 4 or 5 are getting the concept, rest remaining others are not at all interested, no, या उनको नहीं समझ में आया। Let's not define कि वो interested है या नहीं है। So out of 29, if I am saying only 5 are responding, that means 24 are not understanding the concept of data science. So now the training procedure is not well. Why? Because the moment you will be giving your examination, you are not able to answer. Why? Because training was not good. Because you were not able to understand the concept. So this is what exactly happens for the underfitting data set. Fine. So overfitting में क्या है, जनरलाइजेशन तो होती है, लेकिन क्योंकि जनरलाइजेशन ठीक नहीं होती, क्योंकि ट्रेनिंग डेटा सेट बहुत ज्यादा फिटेड है, ओवरली फिटेड है। और अंडर फिटिंग में क्या है, ट्रेनिंग इतनी ही खराब होती है, ट्रेनिंग इतनी अच्छी नहीं होती है, या ट्रेनिंग बहुत ही सिंपल होती है, डिस्पाइट द फैक्ट जो सिस्टम था वो तो बहुत कॉम्प्लेक्स था। इसको इस तरीके से लेके चलते हैं। ओके, हु विल टेल मी द फॉर्मूला ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर? A square plus B square plus 2AB. So it is a square plus b square plus 2ab. Fine. So who will tell me the formula for a plus b raised to power 5? Hanji, can anyone let me know? At least say yes or no, yaar. नो मैम। Why? तुमने पॉलिनोमियल्स पढ़े हुए हैं, तुमने ये आइडेंटिटीज पढ़ी हुई है, यू कैन यूज इट। आई कैन सिंपली डू इट like this because I know। मैम डिराइव कर देंगे लेकिन याद नहीं है इसे। हो गया। I just know the if the bases are same, powers are added, 2 plus 3 is 5, तो a plus b का होल स्क्वायर का पहले फॉर्मूला लगा देती, फिर उसका क्यूबिंग कर देती हूँ, कर सकती हूँ ना? Yes, ma'am. तो यस नाउ दिस मैम। इज व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस। जब हमारे लिए प्रॉब्लम ये है सिंपल, लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है? कॉम्प्लेक्स है। तो प्रॉब्लम क्या आती है? अंडर Under. फिटिंग। गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ गया व्हाट इज अंडर फिटिंग एंड ओवर फिटिंग? Yes, ma'am. यस। ठीक है। सो नाउ अंडर फिटिंग एंड ओवर फिटिंग की अगर बात करी जाएगी तो देर आर 3 types of things. One is under fitting, another one is over fitting, and another one is fitted. So Best. हाँ, best fit बोल देते हैं चलो उसे। Fine. So if I'll go for under fitting, over fitting, best fit will always lie between my under fitting and over fitting. So if I'll say this is a line that actually defines my solution to the problem, that then the points will be sparsely present. अभी दिख रहा है जो पॉइंट्स है, दे आर स्पार्सली प्रेजेंट। दिस इज समथिंग कॉल्ड एज अंडर फिटिंग। कि ट्रेनिंग अच्छी नहीं है, होना क्या चाहिए था, मैक्सिमम पॉइंट शुड फॉल ऑन द लाइन। जब मैक्सिमम पॉइंट फॉल ऑन द लाइन होगा तो इसका मतलब क्या होगा, दैट इज बेसिकली दी ओवर फिटिंग थिंग। ओवर फिटिंग का मतलब क्या है, ऑल द पॉइंट्स आर ऑन दी लाइन। इसका मतलब ओवरली फिटेड है। इसका मतलब नो मैटर अब कोई भी टेस्टिंग डेटा सेट आएगा वो डेफिनेटली इस लाइन के ऊपर तो फॉल नहीं करेगा। फाइन। बेस्ट फिटिंग लाइन कौन सी हो जाती है? बेस्ट फिटेड लाइन वो लाइन है जिस पर, जिसके आसपास या कुछ पॉइंट लाइन पर हैं या कुछ और द पॉइंट्स आर क्लोजर टू द line. If that is the solution, then it is basically called as best fit. Is it okay? Over here it is tightly filled, all the points are on the line, so they are basically the tightly fit. That means the line itself is the data set, the data points in the data sets itself are the solution. That's it. And under fitting mein they are scattered, they are falsely, or they are far off placed in the if we are plotting on the scatter plot or any kind of plot.
Is it okay, class? So what is underfitting, overfitting, and best fit? Yes, first year, just say yes or no. Yes, ma'am. Fine. Yes, So ma'am. what is the difference between overfitting वाला graph and best fit वाला graph? एग्जैक्टली मैं यही वेट कर रही थी, एक्चुअल डिफरेंस क्या है बेटा? एक्चुअल डिफरेंस बहुत माइनर है. इफ दिस इज माय डिसीजन बाउंड्री, जो कि अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं कि व्हाट वी मीन बाय डिसीजन बाउंड्री, if all the values are on the line itself, this decision, then it is overfitted. ठीक है? And if I have my decision boundary and I have the points that are closely placed to this decision boundary, some are, or maybe few of them are on the line itself, but majorly are around that boundary, then it is basically the best fit. Why it is best fit? इसका मतलब क्या हुआ? इसको इस तरीके से लेके चलो. एंड एक ये वाला डेटा. क्लास सबको पर्पल और ब्लू कलर के डॉट्स दिख रहे हैं? Yes, ma'am. So if I want to separate these two, what I have to do? I have to do this. Now just see, some of the majorly purple dots are on one side, that is side 1, and another side on 2 is 2, in which all the blue points are on the side 2. But अगर तुम ध्यान से देखोगे, few of the blue points are in region 1 as well as few of the purple points are in the region 2. Getting my point? Yes, ma'am. नाउ डेफिनेटली व्हेन आई एम अप्लाइंग एन एल्गोरिथम, मैं अगर मशीन लर्निंग इसे कराती हूँ ऐसे कोई मॉडल के लिए, तो 100%ली कोई भी डेटा पॉइंट जो पर्पल को बिलोंग करता था, सपोज ये वाला डेटा पॉइंट अगर आता है, तो ये मिस क्लासिफाइड है बिकॉज इसको रीजन 1 में होना चाहिए था, लेकिन ये आ कहाँ रहा है? रीजन 2 में. So definitely I have to rework on it so that it can be very much learned and it can simply move to my region 1. नाउ इफ आई हैव अनदर डेटा पॉइंट जो कि नया पॉइंट है, जिसको नहीं पता उसे रीजन 1 में फॉल करना है या रीजन 2 में फॉल करना है, वो कैसे फॉल करेगा? जब वो एल्गोरिथम में जाएगा, कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, कैलकुलेशंस करेगा, एल्गोरिथम जो ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं उसके अकॉर्डिंग आउटपुट देगा, तो वो डिफाइन करेगा कि वो रीजन 1 में बैठेगा या फिर वो रीजन 2 में बैठेगा. सो ये डिफाइन कहां से हो रहा है? रीजन 1 और रीजन 2. दिस लाइन इज एक्चुअली डिफाइनिंग दैट. Fine. So this line is actually telling you कि okay, before above it region 1, below it region 2. So अब अगर सारे के सारे पॉइंट अगर लाइन पर है, तो ये जो नया टेस्ट सेट आएगा या टेस्ट का डेटा आएगा, वो कहां पर जाके लाई डाउन करेगा? यहां लाई डाउन करेगा या यहां लाई डाउन करेगा? हाउ विल यू गेट टू नो? सपोज मेरे पास कोई पॉइंट आया डेटा का और मैंने इस एल्गोरिथम को अप्लाई किया जिसमें ओवर फिटिंग हो रही है, तो अब वो कहां पर जज करना चाहिए? कौन से फॉल पे आना चाहिए? कौन सी साइड पे आएगा? कौन सी क्लासिफिकेशन को फॉलो करेगा? वेदर इट विल हैपन और नॉट हैपन व्हेन बोथ हैपनिंग एंड नॉट हैपनिंग आर लाइंग ऑन द सेम प्लेन. कैसे पता चलेगा क्लास? कौन बताएगा मुझे? वी कांट आंसर इट, सो द प्रिडिक्शन इज रॉन्ग. बट फॉर द केस ऑफ अंडरफिटिंग, नाउ इफ आई हैव समथिंग, so I can simply say that okay, it will fall either on this direction or on this direction because everything is not pointed on the line. बिकॉज नाउ सम डॉट जो जो लाइन के नीचे हैं दे बिलोंग टू नो क्लास, जो लाइन के ऊपर हैं दे बिलोंग टू यस क्लास. सो इधर द आंसर विल बी यस और नो. एंड यही सेम चीज अब मुझसे बोला जा सकता है, मैम देन व्हाई अंडर फिटिंग इज नॉट अ गुड ऑप्शन? अंडर फिटिंग के साथ प्रॉब्लम क्या है? द डेटा इज वेरी फार ऑफ. सो इफ आई से दैट माई लाइन इज ओवर हेयर, माई पॉइंट्स आर दिस मच. Similarly, for this for yes class and this is for no class. So hardly 1 or 2 points are near to this. Now there is underfitting. क्योंकि ट्रेनिंग ही नहीं हो पाई है, सो डिसीजन ट्री बता ही नहीं पाएगा एग्जैक्टली yes है या एग्जैक्टली नो है. इट इज नॉट क्लियरली डिमार्केटिंग. और इन अदर वर्ड्स, अगर मैं अंडरफिटिंग की बात करूं, सो इफ माई पर्पल पॉइंट्स आर yes and yellow points are no, and now I want to make a decision whether it is a yes or no. Now this is underfitting. कहां लेके जाऊं? Who will tell me कि अब मेरे पास एक नया टेस्ट आया है, whether it will be a yes event or a no event? Can I define it? Can I define it?
No, I can't. Why? Because the data set is very low trained. It is not able to highlight whether it is a no case or a yes case. उसको खुद को ही नहीं पता चल रहा no कौन है और yes कौन है. So this is the problem. So we have to identify, or we have to make sure that we have to have a best fit, or at least we should lower down this overfitting condition. और ये करने के लिए क्या reasons हैं? There are certain algorithms that we have to perform. There are outliers we have to eradicate. There are null values we have to remove out, or we have to fill it. There are duplicates we have to remove them. ये सब करने के बाद overfitting की condition will definitely move from overfitting towards the best fitting. Is it okay, class? हाँ जी, first years. Beta, it's clear what is the difference between overfitting and under best fit? Yes, ma'am. Okay. So in tomorrow's class, we'll be going with the algorithm. First algorithm, that is the bias and naive bias. So algorithm है क्या उसको समझाऊंगी, and algorithm को perform कैसे करना है. So my humble request, kindly sit with your pen and papers, because we'll be doing it with a न्यूमेरिकल. हम न्यूमेरिकल करेंगे और न्यूमेरिकल से हमें समझ में आएगा कि नेव बायस करता क्या है. So it's not just the algorithm that we are incorporating, we are going with the numerical. वहीं से समझ में आएगा. And after this, we'll be simply going for the practicals on Tuesday for naive bias. ठीक है? Okay, ma'am. Okay.